I have just started recording. Hope it get recorded properly. Okay, so today we will be discussing first about GitHub. What is GitHub? What is Git? So yeah. So if you just go to github.com, okay, and I'll just sign out. So first of all, you have to create an account, okay, on github.com. That's necessary for every developer. That's a minimum bare thing, okay. So this is the kind of website you will be seeing when you are on github.com. Okay, you will sign up like this. You will be filling these all details. Uh, you can also go with your Google ID, but I recommend to go like this, like password, username, and these all stuff. Okay, so for example, I just go with some xyz@gmail.com. Okay, password something something. Okay, uh, and username should be unique. Okay, and then you will get some confirmation mail, and you have to create the account. It's just 5 minutes stuff, so you can do it like that. I already have a GitHub account, so I'll just sign in with that. So sometimes it asks for OTP and all that verification stuff. So yeah. So once you signed in with your GitHub, I hope I'll just wait. I connected to the call via mobile and also have Python and VS Code in my window where I can work simultaneously. Yeah, it's good, Didi. That will work. I already told you. That won't affect anything. First of all, you have to create the account of GitHub. That's necessary. You have to do that. Okay. So this is basically you will be looking at something like there will be a kind of like emoji here or something like that when you have not uploaded your picture, and this will be blank for now for you. This is like a readme file for your introduction. You can just make it in future. It's not actually that much important for physics student, but yeah, building a profile is also simultaneously practical thing we should know. Okay, so uh, these are some of the repository I am right now working on. Repository is basically a folder of code on GitHub. GitHub is an Instagram for coders, okay, basically. In the basic language, we can say Instagram. GitHub is an Instagram of coders, where they can upload their work, their coding knowledge, codes that they want public to see. So these are some of my stuff. Like Glamo is my own Python package that is widely used in astronomy. Okay. However, it is not published yet. Will be soon get published. And however, it is used in a beta version in 2-3 astronomy institute in Pune, Ayuka, and Dharamshala. Moreover, these are some of my repository like Gaussian fitting, how to like fit the curves using Gaussian profile. That will obviously doing in this whole course. And there are some data analysis pinned here. However, there are more repository, but more likely the important ones are mentioned here. So these are like your all bio details. You can edit it. These are some website or place you work at or you study at. These are like normal achievements. Plus, there are some organizations. So we will all be enrolling ourselves in this GNDU Physics Club. Okay, so I have already created this. So our whole code will be published here. The once we end up with meeting, I will be uploading whole code here. So you have to access whole code with Zoom meeting recordings or etc. Will be provided in some repo only here. So these are all other repository, all other clubs or groups. These are a kind of hack club, a very widely known in the world. I'm also the member of that, and these are some more things you can explore. But no need to explore my profile. There is nothing much on my profile. So I guess for now you have created the GitHub profile, right? I expect
I expect that you have created your GitHub profile. Yes or no? You can just type in the comment if you have any issue. We will then move forward. Okay, because yeah. So there are many people, I guess, who have already made the GitHub profile. Yeah. So I need all of you to make GitHub profile. Otherwise, we can't learn version control system. Okay. So version control system is like linking your command prompt, the terminal, in with the GitHub. Okay. It's like controlling your GitHub account from your PC without accessing the website. As simple as that. With some line of codes. Okay. I'll just wait for 2 minutes. Those who have not created the GitHub profile, kindly create that. Then we will be moving forward with our Python. And at the end, we will be learning how to control GitHub with Git and what is Git. Okay. So first of all, we will be doing some Python code, and then we will be uploading that Python code in the repository. So basically, the folder is known as repository. It's the fancy name for a folder on GitHub that we post. Okay. So there are just four yes in the comment section. I want to know what about other 13 people. Are they with me or not? So, um, so I won't be waiting that much for everyone because we have to mainly focus on other things also. So wait 2 or 3 minutes for these kind of stuff. But yeah, when we are just working with some heavy code, we will definitely wait for others. But this is just creating an account, so I guess everyone should have one account and just comment yes or no in the comment section, right? Okay. If you are stuck in anything, you can also ask. There is no shame in asking doubts. Okay. So yeah. Please don't ignore GitHub. GitHub is very important thing in building your coding profile and your professional profile. Even computational astrophysicists and even many of the scientists have a GitHub profile where they upload their thesis code. Okay, so it's not that like not important. It's important. Okay, I will not editing any stuff. I'll just upload what we have done in the recording as it is. Okay, so you can skip if you want to re-watch it. So I will be sharing some PDFs with you guys, some cheat sheets for Git that I have shared with other people's previously. So yeah, we'll just wait 1 more minute and then we'll continue. We'll, we won't be waiting. So actually there are 17 people and just 5, 6 have said yes. If you have still any doubt in how to create the profile or something like that, you can just ask me. Oh, wait a second. क्या है वो कर दी बोलो ले लो साफ करना भी उसने वीडियो एडिटर ने मेरी वीडियो भी बना ली ओके बंद कर देना so yeah I guess most of the people have downloaded I expect that so now we will be focusing how to download Python okay
I'll just continue fastly with that because I guess most of you guys have already downloaded that. Okay, so we won't be wasting any time. So I'll just go fastly. So you have to go with python.org. This is the main website of Python, and you have to go to downloads, whichever you are using. You are using Android, Mac OS, Windows. Don't go for Android. I suggest that. Like I'm using Mac OS right now. The latest release is 3.13. Okay, so never download a latest release. Why? Because Python is not only the thing you will be working on in future. Maybe you will be working with some Qiskit stuff if you are in a quantum field. Maybe you are will be working with Glamo. Maybe working in AstroPy. These are all Python libraries. Some of these Python libraries doesn't support the latest version because they are not upgraded with that version. Maybe they are using some old version. For example, TensorFlow for machine learning. And TensorFlow is still using 3.11. Okay, 3.11 version. So we should download the previous versions. Like don't go below 3. 3 minimum where is 3. Python 3 is the minimum bare condition. Don't go with 2 point something. It's very old stuff. Maybe the code also very. So you can just go with 3.1 3.10.9 or 3.11 is okay. There is one more thing in those who are using Windows. There is something called Microsoft Store, so you can also download Python from there. I recommend you to download Python from Microsoft Store because earlier when I was using Windows, after the release of Python 3, the Python 3 Windows was not supporting the download from here. I don't know why. Maybe my Windows computer was like that or something. But I recommend you to download that from there. Okay, so that's the case. After you downloaded the Python, you have to go to the terminal, CMD for the window users, and for the Mac one it is terminal. Of course you have to write Python. Okay, Python version, Python slash slash with a space, then slash version. Then you see which version you are using. I'm using 13.13. It's not the version I am actually using. For my PC, there are two downloaded already. One is 3.10 and another is 3.13. So I am not using 3.13. I will show you where is the difference. Okay. So for terminal right now, my it is showing 3.1, 3.3. Uh, so I'll show you why it's showing in future when I will be starting with Jupyter Notebook. And to download the Jupyter Notebook, you have to search Anaconda navigator. So you have to go for the first site, Anaconda navigator. Okay, Anaconda is a very huge software. It's around 1 GB. So that's why I told you to download it early. So you have to go to download. So it's like, ah, it's free. Okay, I thought they have given some like subscription stuff. No. Okay, so you have to like get started. They will be asking some mail or something, I guess, or you can just, yeah, they are asking some mail. It will be downloading some file. Uh, then you have to unzip and all that. You have to extract and install that Anaconda. After you did that, there will be something called Anaconda in your search tab. You have to search like this. For Mac, it's a bit different. I'll explain after that also. In the search bar of Windows, just go and search Jupyter Notebook. Okay, you will be seeing some logo, orange logo. Okay, uh, Jupyter Notebook. Okay, something like this. So you will be seeing something like this logo. Don't open it yet. We have to do something before that. Don't open it yet. So it will be looking like this. Those who don't have this logo after the search in their search bar in Windows for Windows user, kindly tell me right now. Kindly tell me right now. Will we fix that?
All of you guys have the this Jupyter logo when you search in the search bar of Windows. Kindly just say yes or no. Be interactive if you are learning. I guess that would be very best for me as well. So all of you guys have installed Python, right? I'm assuming that those who, yeah, okay, uh, okay. It's really fine when if you are using a VS Code. You can just say yes. I have downloaded the Python with VS Code. You can just type it like that. I will be like fine. Everyone is on the mark. So, because both are same, but I recommend using Jupyter. VS Code is for the people who are into just coding, not data analysis. Jupyter is for data analysis. Even I am working on Jupyter VS Code right now. There is a lot of 3,000 lines of code in the single kind of thing working with me. I'm working on it. So yeah, that doesn't matter. We will be using that also if needed. So I think that all of you guys are with me having Jupyter notebook downloaded, right? So after that, you will be just writing Python in your command prompt or terminal. It will be showing like this Python with version and all these kind of stuff. If you will write help here, it won't be if you will be writing help here, it will be showing all the docs and all the stuff. Okay, so I'll just go like this. These are some version information you can get after writing this. Okay, I just wrote quit, Q for quit. Okay, to just get out of it and use normal Python. Here also you can use a basic Python, basic to advanced Python, but I don't recommend. IDE is a proper format. IDE is like a proper environment which can give you some feel and a very organized and clean way to study Python. Study Python or you can learn Python. Understand Python basically. Please don't cram a coding language. Coding language are very fantastic. You can do anything with it. Anything you can imagine, you can do it with coding. You can change world with coding. Okay. So if I will just write uh, a is equals to 3 and b is equals to 3, a plus b, then it will be giving 6. These are basic math problems. Okay, so I assigned a as 3, b as 3. I gave some value to a and b and then plus a and b, it gave me 6. So this is how you can just work in the command prompt, but I will not recommend you. We'll just now terminate this. We'll just quit the terminal or command prompt, and now we will be basically working with the Python notebook. Okay, so main Python starts now. So for Mac users, go to terminal and write Jupyter notebook. Okay, and press enter. You can also do the same thing with the command prompt on Windows as well. But if you have downloaded the Anaconda via Anaconda, just go and click on the application button of Jupyter notebook. That's it, and just press enter, and it will run like this, and it will open on your like these Chrome. It is a web-based software. Okay, so it local host actually. Everyone is with me. Has opened the Jupyter notebook right till now, so that I can just guess that someone is learning with me. So everyone is with me or not? Everyone has opened the Jupyter notebook or not? Just say yes. Okay. So yeah. Yeah, that's fine. Actually, it's not a big deal. Actually, I just take it along, a very long. We just spent around 20 minutes on just explaining what is Python and all that stuff. So Python is basically the coding language. Okay, used to do anything you want. It's a coding language means something where you can teach computer to do something crazy. Okay, so where's the chat? So only two people are with me. I guess we have 15 in total. One excluding me, we are 14. So only two are with me. That's not the
right way actually. I will not recommend you to watch the recordings. I recommend you to make notes side by side, notes in your computer or maybe handwritten notes, whatever you do. But I recommend a digital note, of course, because previously I was also taking some lectures on Python. Some of the students, many of the students were dependent on the recording and they just lost at the end when we were doing the research project. Okay, we are still doing some that part in astronomy, but yeah, that people are low, so we have not included them in it. So, yeah, yeah, that's fine, totally fine. VS Code is totally fine. So yeah, I'll tell you what is the difference between VS Code and Jupyter. There are some file difference name and some terminal difference. I'll just take it side by side. I'll just wait for like 1 more minute. We'll start on 32. Yeah, totally fine. But yeah, I'll recommend you to shift to VS Code as soon as possible. I missed the collab. So collab.research.google.com is the Google Collab. It is a duplicate of Jupyter Notebook that work online if you have internet. For example, I will like you can just directly go here and create a new notebook, but it consume your Google Drive storage. Okay, not a local storage. That what is it? It is right now. Google has provided a 1 TB of storage, I guess 1 or 2 TB of storage for students. That's totally fine. But in future, you might not have that Google Pro. Might or may or may not have. So I recommend you to use your local storage because that definitely be a good choice for right now studying. For future collabs, you can use Google Colab. So I'll just create a notebook for now. Those who are not having that, I just clicked on the new notebook and so it's something like that. Okay, so you have to link it like with the Google Drive. Okay, so for saving all the stuffs, you have to link it with the Google Drive. Otherwise, you will lose all your data. Okay, so just a second. So here you can just write the code and all do all the stuff. If I just open to Python, so I will be skipping this stuff. Okay, this is same as the kind of Jupyter notebook. Just a second. So, okay, for those who are anyone is using the Google Colab. Anyone using Google Colab? I'll just firstly tell them. From you have to write some basic 2 line of code every time you make a new notebook to link it with the Google Drive. So you have to write from Google.Colab import drive, and then you have to mount that drive. Mount that drive means you have to link that drive. Okay, so you have to link that drive. So it will be like content.g drive. Okay, if you will press shift enter to run this command, it will take 2 or 3 seconds, maybe a bit more based upon your internet. So it will ask you to connect with the Google Drive. Once you will click on it, it will go to some new pop-up window and ask you to link this. But I will not doing that because I will not working with it. Once you will do all that verification stuff with the Google, it will normally run without this error. Okay, so I'll just skip it right now and just get back to our VS Code. So right now we will be working with some uh, a lot of stuff through this whole course. So we will be creating a new window. Okay, new folder for it. So yeah, I'll just creating like gnu underscore python.
I recommend you when you are working with some coding stuff, use underscore rather a space gap. Okay. So I just like created a folder and I create a new folder like day1. Okay. I'll just rename it as day underscore one. And for the same case, those who are using like VS Code, you go to files in the VS Code and go to new window. Okay, there will be something like this new window with you. You have to just open, click on this open, and you can just create a new folder somewhere in your files where you want to create that. Okay, and then start working with something. Like I'll just create a new folder. Okay, I just open that new folder we created, right? Where it is, labs. Okay. So for example, I just opened day1 folder. It is day1 here showing. So first file name you have to create main.py. So it will be like this. Okay. So you have to create main.py here. You have to check if it is showing 3.13 or 3.10 version here on the Python. If not, you can just choose anything. Like I was just creating here, you can see I have a lot of various things. I have 3.13, 3.10, 3.9, 3.96, a lot version of Pythons for different things. Like this is for TensorFlow, this is for Glamo, other stuff. So these are different for different versions. For the when the time when some Python packages were not supported by that newer version. Okay, that's why I created that. So for the basic Python, you can choose anything. Okay. So I just created the latest version right now. No worry, you can just go with the old version. It's almost same. So you can just start working with this file. But for the people who are working with the Jupyter notebook, of course, we will be focusing more on Jupyter notebook. You will be like seeing this. So Jupyter Notebook also work with Julia. Julia is also a data analysis file, not file, no, a programming language. And there are two, three, something like this Python 3 IPy kernel. Okay, so you can choose this. I'll choose this because I have created a new kernel for myself where I have already downloaded a lot more Python packages that won't be making obstruction in it. But I will surely telling you which module to download when. Right now we will be just going with the basics. So you can just click on the IPython kernel. I'll just choose Glamour for now. So it will be creating some file named as untitled. When you will click on this untitled, it will be like untitled.ipython notebook. Okay. So IPython notebook is IPython. Py stand for Python. Notebook stand for notebook. Notebook is basically Jupyter notebook. That's why they just named their file as Jupyter notebook. But both contain the same kind of stuff. Okay. So it's just normal Py and it's just Python. So I'll just delete this main.py right now. No, I'll not delete this. I'll just run one or two things here to show those who are working with Jupyter Notebook. Oh, sorry, VS Code. I'll just rename this file with Jupyter Notebook as main.ipython. Okay, so I just named it as like this. So everyone is with me. Any confusion till now because we have not started coding yet. So I guess no worries. So our first code will be asking the computer to say something. So there is a lot more reels on Instagram, a meme on Instagram that some girl or some opposite gender is asking like, "Do you code?" And there is a person typing print "Hello world," but we will type print "Hello physics" today, and then press Shift Enter. Shift return for the people who are on Mac, and Shift Enter for the people who are on Windows. Okay, so this is our first Python code. So basically what it is like print, then bracket, then parenthesis, then inverted commas, first parenthesis, then inverted commas, and the message you have to ask the computer to print out back. Okay, so I just told print hello physics. Okay, so when I just press the shift enter, it's just calling hello physics.
Okay, so you can also use the double commas, double these things. These both are same thing, but there are some like things where we have to take in mind when to use the double one and single one. I'll tell you why. So for example, this is our first code. Then I'll just go with the Python VS code and just go with this like hello universe. Okay, and now how to run in this? So you can just first go with this, but for the Python 3 it will be giving some error here. You have to go to terminal. You can open terminal from this things here, cross and alert thing. You can then go for terminal. Then you can just write Python 3 and then the file name you want to run. It is like Python 3 space main.py and then press normally enter. It will give you hello universe. Okay, so that's the a bit difference. Then when you have to run the Python file in the VS code, then you have to run again and again write like Python 3 main.py rather just pressing shift enter. Okay, so that's the difference. A lot more time consuming. Okay, so the physics people are crazy. The astronomers basically are scientists. People are very crazy. So they are lazy and crazy. So they want the quick stuff. Okay, so we use Python notebook for that. So any doubts till now? Any error for the first code we wrote? Any issues? What is it for and why we just print out something? You can even print out a big line. We can print out a big poem also that we will continue now. So I guess everyone is with me. No issues till now. If you have any silly doubt, no doubt is silly. First of all, you can just ask me. I'll just tell you. Okay. So for the thing where we have to use different kind of sentence formations, like for like I want to print some sentence like which include I'll just uh, I'll just use the single comma type of thing first. He He's cute. Okay, so I'll just using like this. He's cute. Okay, so I will be getting an error. Why? Because I'm not writing he is cute. Okay, so I'm writing he's cute. So I'm just taking a inverted comma in the use of the sentence as a part of sentence. So I'll not be using these to cover all the sentence. Okay, so I will be. So I'll just zoom it. I will be writing here double inverted commas. So this whole is now a sentence covered in some protection. Okay. So he's cute. Now I will press shift enter. It's like he's cute. But when I did like single ones, it will give error because it is not identifying which one is the complete sentence. Because maybe it is identifying that he is only the sentence. The sentence just ended at he. Then there is some wrong syntax here. Okay, so yeah, syntax error. Basically, it was syntax error. Syntax error means there is some coding problem. You have just did some blunder. Okay, so we will use here double. So he is cute. Okay. Now there are some more things when you have to write a lot more lines than one line. Maybe you have to write like hello physics or another line. My name is Rashmi and I'm an amateur astrophysicist and I want to be an astrophysicist. Long more lines. So how will you write that? So you will be using one, two, three single commas like this, three upward commas, whatever I you call it. Okay. So you have to use one, two, three. One more thing. Go to setting, click on auto save document and auto close bracket. Auto close bracket will be like I'm right. It will be making your code more faster. Like I just write here. What I'll do that I'll go here, go with print. Oh, so actually I closed that for myself. I'll just click on again. So I'll just go like this. It will just printing both the pairs of brackets. And then I'll just do it like this. And then I will write, hi, my name is Jashan Preet. Okay.
and I am a BSc physics. Oh yeah, my spelling. Physics student. I love astronomy. Astronomy. Okay, so now I'll just press enter. It will be printing these all lines together. But when I'll just do it like this with one, it will be definitely giving error, because these one and these double ones are just for one line sentence. Okay, they will be literally giving you syntax error. So when you are just going with the three ones, three are made for that type of thing. Then when you have to write a long sentences. Okay. So any doubt till here? Any doubt? Yes or no in the comment section, please. It's very simple, I guess. There must not be any doubt till now. But yeah, that's good. If anyone has just any doubt regarding code, you can just, that's a simple part. And now you can flex that you know Python. Okay. Okay. No one has doubt. So we'll continue. What can we learn more about these things? So yeah. Okay. So we'll do that later. First, something called comment is there. Okay. When you want something to write for yourself, for your code, you want to include something in your code, but you don't want that to run as a part of code. In simple word, आप कुछ कोड के अंदर ऐसा लिखना चाहते हो जो सिर्फ वो बंदे को दिखे जो वो कोड देख रहा है, बट आप नहीं चाहते वो वाली लाइन जो है कोड के अंदर लिखी हुई वो एज अ पार्ट ऑफ कोड रन करे. सो दैट इज कॉल्ड एज कमेंट. यू आर कमेंटिंग समथिंग but it's not executing. So how we have to write it like that? You have to print hashtag, then whatever you like to write. This is a comment, and this won't be executing as a code. Okay. Also, this is also a comment. For like this is a comment. This is also comment in Python, I guess, 2 version. Now it is not considered as comment, I guess. So because this is printing. Maybe Python 2 version, when I learned Python, this was also the comment. So maybe it might get work in this. I'll just check it out. Otherwise, you don't need to do this. Yeah, it is comment in the VS Code still. So yeah, for it is also a type of comment when you will work with the three type of these dundies, these commas. So this is also considered as comment, but the Python notebook doesn't consider as comment. VS Code do. Okay. So when I just run the Python file, it doesn't give anything because it's just ignoring that this is a comment. Okay. So this is also a comment. Even if you write it as a single line, this will be working. So uh, even if you will be doing like that, it will be working. But yeah, this is a command. Ignore this. Just do it like that. Okay. So this is also a command. But hashtag, like this is a comment. This is a single line comment. Okay, single line comment. So you can only write a single line, like just you do with these in commas, inverted commas. But you have to, when you write a long more comment, then you have to use these lines, these things. This a multiple line comment, and I can add as many lines I want. Okay, so that's it. So one more thing, uh, there are some features like uh, this you might have seen, slash n. Okay, slash n is used to skip a line in Python. For example, I don't want to use these a lot more inverted commas. I just want
to use single line, this type of thing. This line must be multiple line. But how? After this, I will use n. Okay. So what slash n has did is just skip the line to the next line after slash n. Okay. So what I did was after this line must slash skip the line to the next line. Okay. Okay. Yeah. So that's all about the basic things we can learn, but they have rarely a use in data analysis. But yeah, we use these comments a lot in the data analysis. We use these things to like give us a minimum bare like indication till where the code has been run. Okay. So now we'll be shifting to variables and data types. Variables and data types. So there is something called markdown in Jupyter Notebook. Markdown is used to write fancy letters to make your code look beautiful. For example, hashtag data, like variables. We'll do first variables and data types. Okay. So when you will press enter, it will be a very big font. When you will just go with double hashtag, it will be a little font. I'll just go like this. I'll just copy. You have to give a space, okay, after the hashtags. So like this. So you see, there was a font difference. So it works till 6. So you see, variables and data type, the font changes. So you can just make the look of the kind of your notebook good. This is our normal text. Okay, so it is a normal text. You don't need to use these much hashtags. Okay, so this is all about the Jupyter notebook and basics, a little bit basics. So now we'll continue with the variables. So variables are, anyone wanna tell me what is variables? Till the knowledge beyond before this you have, before I will get in. We all know what are variables, right? Any one of you want to just tell me what is variable? It will be making things interactive and engaging, right? So what are variables? So yeah, I'm warning you that for few first few lectures we will be getting a boring things. Okay, so we won't be doing the crazy simulations that some black holes are merging or some eclipse is happening or some Newton law or pendulum, all like that stuff. We won't be doing. We want to learn a basic Python. Okay, so there is some comment. Variable in Python programming language are like containers and are used to store and hold information data. Very fancy definitions, but yeah, it's very correct. So variables are something that hold information, okay, any type of information. So yeah, she was right. That's it. Variable is anything you want to create it. Okay, so like a is variable. When something is written on the left side of is equal to, it is a variable. Okay, most of the cases. Okay, so for example, a is equals to 1, b is equals to, if I want to write some alphabetic things, then you have to always use these two inverted commas, like gestion. I'll just write here 19. Okay. So then I'll just go with true. There are some true or false things. I will be explaining what I'm writing. Okay. So I'll just name it as C, different name, and then I will go with 8.6, and then I will be doing that some stuffs. Wait a second.
Wait a second, guys. So print. Uh, okay. So I'm not doing this right now. We'll do it in the next cell. So these are cells. One, two, three. There is a more thing in Python VS Code. There is no cells. Okay. So cells basically make your work look better. Okay. That's the thing. Then we'll just find out what type of variables are these. Okay. So what you have to write is whenever you want to print something, you have to write print parenthesis. Parenthesis is bracket. Then type, normally type, and the variable name. Okay. Okay. First of all, we'll not check the type of the data type. We'll check what is the value. What if I do this? What if I write this? What will be the output? And what if I write this? What will be the output? I want you to answer what will be the output of the first thing and what will be the output of second thing in the comment section as fast as you can. Okay, so what will be the output of these two things? Print bracket inverted comma a and print bracket a. What will be the output? So for first one, someone said one. Okay, from like uh, are you saying like 2.19? Like for the अच्छा okay. First वाला A और second वाला 19. Okay. First वाला A print करेगा और second वाला 19 print करेगा. और someone said कि first वाला A print करेगा, first वाला 19. Yeah. So I'll reveal that answer. That's not a big problem. Yeah, of course. First वाला A print करेगा, second वाला 19 print करेगा. Why? Because first wala is now considered as something written, a sentence. When something is written in the inverted commas, it is considered as a sentence. It is considered as a letter. When something is just written as this, it is considered some value of that type of thing written in that bracket. It's like it's like what is the value of a if there is some value. Okay, so it is printing 19, the value of a, what a is equals to. Okay, when I was writing like this, it's like printing the word a. Okay, printing the word a itself, not printing the value of a which it belongs to. Okay, for example, I just delete this and just do like this. What happened? It already stored this value. Okay, so that's why. So I'll just do it like e, which never existed. Okay, so what I will do is I'll just write e and then press enter. First of all, it printed the letter e because it's considered as a sentence. The second one is trying to find out the value of e, but the error is name error. Name e is not defined because yeah, because we have never defined e to our system. Okay, so it won't be printing anything. It will be definitely giving a error. So I'll just do like this and do like this. So this is the basic difference. This is a no. Our system is considering this as a string. For a sentence, a technical word is string for our system, for our Python language. Something in these inverted commas are considered as string. Our system want a value of a. Okay, value that belong to variable a. Okay. So now I'll just go on and print other things. Okay, if you will just write like B comma C comma D, it will be printing a tuple.
tuple or tuple will be focusing in future. Just let it be like it will be printing something like all that we want to know, like b value, then c value, then d value. Or otherwise, if I'll just go with like print, then I'll just go with like print, first of all print the value a and b and c and d. It will be printing all the values. Okay, that's it. अगर आप ऐसे भी करोगे, b अकेले अकेले लिखोगे तब तो करेगा ही करेगा बिल्कुल. It will be not working like that. Okay, तो ऐसा करेगा. So ऐसा है. So it will be doing like this: a b c d, all values together. Okay, so also you can do it like this: a and c. Okay, so it will be creating like this. So now I'll just write something here. This is the integer which is considered as int, a short form integer. This is a string which is considered as str in the Python language. Okay, this is boolean. Boolean. Boolean are either true with capital T or false with capital F. Okay, remember capital F and capital T are the things you need to write. Then we have decimal. Okay, now we get ask our computer what are their values. So now I will be printing something called type of A. What we did is we use print, then bracket, then type, then bracket of what what value किसकी हमें type चाहिए, the variable we wrote. So it gave the classes int. Int means integer. I'm doing this for the first time. This one. So yeah, it already gave error. So wait a second, let me just test. Okay, so one value at a time. So I actually just experimented it for the first time if it take. So what I will do is just go with this and just do it like B, C, D. So it's like first one is the decimal is known as float. Float is decimal. Okay. So first one is our integer. 19 is our integer. String is our statement JSON, which is enclosed in this curly commas, inverted commas. And then we have these boolean values, true or false. Then we have a float decimal values 8.6. Even I just write like this now, 8 point something, it won't be giving you anything. It will be giving you maybe, yeah, it is considering it like this. But when you will like write this, it will be giving now integer. Something when the point is considered as decimal. Okay, it considers like 0. Okay, so it's a float. Till now everyone is with me or not? It's simple guys, है ना? ये ज़्यादा इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए. Those who even who are learning for the first time, it's very simple. Just go through one or two times more, you will just get it. Yeah. इतनी तो मेरे ख्याल यार मैटलैब में भी होती है. फॉर दोज हु आर सीनियर, मैटलैब इज लाइक अ लिटिल बिट सिमिलर टू लाइक पाइथन. Like Python, MATLAB is a smaller version of Python. So itna to like it's a basic thing. So there is one more thing. याद आ गई. Those who want to learn MATLAB, go to my profile, go to my repositories. यहाँ पे repositories में जाओगे ना, there is MATLAB also. यार बहुत सारी repository. MATLAB for starters, Julia for starters. ये दोनों चीजें हैं. पर the thing is Julia is not completed yet. तो मैंने मतलब like if you are learning Python na, no need to learn Julia. Okay, so these are all same things. Okay, so they are like these tell where what is the arena 9. Okay, so I was like crazy.
Uh, so till operators, if else statements, there are some kind of stuff. Okay. So yeah, till operators you can learn by Julia from here. And there is only one file. These files for MATLAB, everything is included in it. Till functions. Okay. So there is only one file. Like we have this main.py, everything from starting to end till the basic MATLAB for starters is included. Not visualization, I guess. Or maybe visualization, I don't remember it. Someone has started also. Preeti Didi has started. Okay, nice. So she is talking. Okay. So yeah, let's move forward. What else we can do now? So now let's do some maths. Yeah. So we have these things here. Before that, I guess I'm just missing anything or not. Okay. So we'll just, yeah, I'm missing. Definitely, I'm missing. I just told you now. I'll write one more sense for that stuff. So there is something called F. F नाम की एक चीज होती है जो where you can just include anything you want from any variable, anything in your sentence. You have to write F. You have to use this. You have to use these. You have to write F before the inverted these things, inverted commas, and you have to go with like um, my name is, then give me a second. My name is, then you have to write B, then you have to go here, and B will be like printing that name. So then is session, then my age is something like you want the variable a. Wait a second, there is some error. There must be something I'm missing. Yeah, yeah, now it's correct. So you have to write these all in one line. That's easier. So then dot, my age is inverted commas. What is my age? My age is a, and what else? My CGPA is, what else was it? D, and I am true. Okay, I am true. Let's see. I just go. What at print? My name is Jishan. My age is 19. My CGPA is 8.0. 8.0. Okay, just for example. 8.0 and I'm true. Okay. So it's printing the variable values in the sentence. So that's it. You have to just write F and then go with the flow. For writing variables in the comment in the line, you have to go with in curly bracket B and these all things. Okay. So you understand these things? I guess इतना समझ आ गया. एक बार यस दे दो बस, हम बेसिक सा ये लिखने वाले का काम खत्म हो गया है. बस इतना आपको बताना चाहिए. बस उसके बाद अपना काम सेट है. जस्ट अ सेकंड गाइस.
ओके सो वी आर डन राइट, इतना हमारा हो गया। अब हम करते हैं हमारा डेटा टाइप्स हो गया, हमारा वेरिएबल्स हो गया। अब हमने एफ वाला कर लिया राइट, ये इम्पोर्टेंट था। हम अब करते हैं इफ एल्स वाला कर लेते हैं। इफ एल्स वाला ठीक रहेगा। हम नहीं तो हम एक और चीज देगी, मैथ्स। मैथ्स सो आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माई नोट्स, ठीक है, नॉट फ्रॉम लाइक ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह। तो नोट्स कौन से हैं मेरे, नोट्स भी मेरे ऑनलाइन ही पड़े हुए हैं गिटहब पे पाइथन के लिए। बट अब जो ये वाले नोट्स होंगे ये वाले मैं पब्लिकली डाल दूंगा। जो वो नोट्स हैं मेरे वो मतलब कुछ लोगों के लिए ही एक्सेसिबल हैं, तो वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, पढ़ाना वाला कोई दिक्कत नहीं है अपना। सो वी विल डूइंग मैथ्स। सो अब हमने क्या करना है, मैथ्स मैथ्स पढ़नी है हमने इसमें। सो विल बी डूइंग व्हाट आर ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर व्हाट आर operators. So what are operators? Anyone? What are operators? From your current knowledge, what are operators? Just type it. कुछ भी लिख दो यार. What are operators? What are operators, guys? Operator यार. हाँ बस यही तो है. तो प्लस माइनस डिवाइड ये वाले सब कुछ ऑपरेटर्स कहा जाता है. नॉट ओनली दीज, परसेंटेज और भी बड़े बड़े होते हैं. विल डिस्कस. तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 3. दो हमने इंटीजर डिफाइन कर दिए बिकॉज हम वी कांट डू. ओके सो देयर इज अ कैच, वी कैन डू प्लस माइनस विद द लेटर्स आल्सो इन पाइथन. तो वही है कि 1 + 2 3 तो होता ही है, पर 1 + 2 12 भी हो सकता है इसमें. ठीक है, तो दैट्स द कैच हियर. तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स हम सिर्फ नंबर्स के साथ पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिंट a+b, और सॉरी x+y. इसको मैं कॉपी करूंगा, इसमें मैं माइनस करूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा. मल्टीप्लाई के लिए ये होता है एस्टेरिस्क मार्क, ओके. और डिवाइड के लिए ये वाला स्लैश वाला होता है. और उसके बाद पावर के लिए होता है ये वाला डबल डबल एस्टेरिस्क, मतलब x⁴y. x⁴y मतलब 5⁴3. उसके बाद अपना होता है परसेंटेज. परसेंटेज होता है मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, लाइक हाँ मैं बताऊंगा कैसे, देख लेना आप अपने आप को पता चल जाएगा. उसके बाद कोई बचा तो नहीं. उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कोई बचा है. एक और था, इसमें मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ, बट हाँ यार एक. हाँ, फ्लोर डिवीजन. राउंड ऑफ करके जो आंसर आता है, प्रिंट x/y. ये सारे हो गए अपने ऑपरेटर्स. अब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो क्या आया, x+y 5+3 8, x-y 5-3 2, x मल्टीप्लाई बाय y 15, x डिवाइडेड बाय y कितना होगा 3 3 अपना 3 18, हाँ 1.66 राइट. उसके बाद पावर कर देंगे, 5 की पावर 3 होता है 125. उसके बाद हमारे पास हम मॉडुलस करेंगे. मॉडुलस का मतलब हम रिमाइंडर निकालेंगे. 5 डिवाइडेड बाय 3 करा ना, तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा 1 पे जाता है, तो बाकी रिमाइंडर 2 बच जाता है. ठीक है, और अब 5 डिवाइडेड बाय ये, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2. और इसमें क्या हुआ कि x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 1.6, बट x floor division is equals to round of
x divided by y which is equals to 1. ओके, सो दिस इज द केस. इसमें हमें अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ मिलेगा. डिवीजन तो होगी बट राउंड ऑफ मिलेगा. इसमें क्या होगा, हमारे पास पावर होगा, वो पावर डिवाइड, इट इज बेसिकली फ्लोर डिवाइड, फ्लोर डिवीजन मल्टीप्लाई माइनस, माइनस लिख देता हूँ यार, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ऐड, दीज आर द थिंग्स. ओके, उसके बाद एक्चुअली वैसे तो मैंने पाइथन एक दिन में करवा दी थी लोगों को, बट वी विल नॉट डू दैट मच, अगर बिकॉज उनको थोड़ी थोड़ी पहले आती थी, राइट. तो वो चक्कर नहीं है, हम आराम से करेंगे, एक दो दिन लगा लेते हैं. पर हाँ, एक दो दिन से ज़्यादा नहीं करेंगे पाइथन को. पाइथन बेसिक अगर पाइथन आती है ना, देन विल कंटिन्यू. हमें बस इतनी इतनी चाहिए जितनी जितनी हमें चाहिए बस, ठीक है. पैसा हम लटकाएंगे नहीं कि मतलब हाँ पूरा जैसे सेमेस्टर तक. तो ऐसा करें, वो सही रहेगा बस बेसिकली. ठीक है, क्यों मतलब अगर जितना हमें पता होना चाहिए, अगर हमें पता है तो बाकी क्यों करना. ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया. उसके बाद एक और चीज होती है, आई जस्ट मिस्ड, आई जस्ट लुक्ड इनटू द नोट्स. उसके बाद एक और चीज होती है, यहाँ पे हमने स्लैश एन में पढ़ी ना, एक स्लैश टी होता है. स्लैश टी होता है कि गैप देने के लिए. ये देखो, लाइन लाइन में गैप दीजिए. टैब टैब के लिए होता है, जैसे हम टैब दबाते हैं ना यहाँ पे, तो टैब में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप आ जाता है कभी कभार. ठीक है, कोड में तो हम एक और टी डालेंगे, एक और टी डालेंगे, उतना ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल गैप आ जाएगा. बस ये देख लेना. ठीक है, उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट फंक्शंस. टाइम कितना हो गया, 10:30 तक करते हैं यार आज. ठीक है, तो इतना तुम पढ़ लेना. उसके बाद क्योंकि है स्लाइसिंग और लिस्ट और इंडेक्सिंग, वो है इम्पोर्टेंट, वो आज नहीं करनी. और कल है फ्रेशर्स. सो टुमारो इज फ्रेशर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कमिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू फ्रेशर्स बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टुमारो. But we will check out the poll in the group. If people are ready for the tomorrow class, we'll continue at the same timings. अगर नहीं तो we'll do it on Monday, because on Saturday I want to come to university and I'm currently at home, so I need to travel a lot. So we'll continue like that. Okay. So for now, today's the last topic. Today's last topic is input output. आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लाइट लाइट रखा सारा काम. इनपुट, इसके बाद हाँ हाँ सर, गेट भी तो करनी है हमने, गेट भी तो पढ़ना है, हाउ टू अपलोड इट. गेट, सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट. इसके बाद हमने गेट करना है. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट कि हमसे कंप्यूटर कुछ इनपुट मांगे और हम आउटपुट दें, फिर वो फिर आउटपुट दे उसके बेस पे हमें. लाइक नेम, नेम मांगेगा, इनपुट डाल देना बस. इनपुट, वैसी पैरेंथेसिस जैसे हम प्रिंट डाल रहे थे ना, प्रिंट के अब आगे सिमिलरली वी हैव टू राइट इनपुट. इनपुट इन्वर्टेड कॉमर्स, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम. अब ये क्या किया, व्हाट्स योर नेम के आगे इसने एक फिल इन द ब्लैंक डाल दिया. अब मैं इसके अंदर जशन करूंगा ना, कुछ नहीं करेगा, वहीं पे ऐसे रख देगा. अब इसको ऐसे तो कर दिया इसने, अब इसको थोड़ा सा फैंसी बनाते हैं. अब क्या करना है, आई वांट कि जो वो है ना, ओहो, वो है जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस आई थी, वो एक लाइन छोड़ के आई, तो मैंने एंड डाल दिया उसके आगे. नाउ, और प्रिंट करे उसके बाद ग्रीटिंग करे उसको. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, एफ डालेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड द इनपुट आल्सो, तो एफ डालेंगे हम. सो हाउ विल राइट हेलो, उसके बाद क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, नेम हेलो, और फिर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया. तो क्या आएगा, जशन. ओहो, एंटर. इस बार एंटर दबाना, हेलो जशन. स्पेलिंग गलत लिखे अपने नाम की, प्लीज इग्नोर दैट. हेलो जशन, तो ऐसा है. ठीक है, सो ऐसा ऐसा सा है. सो और कुछ, हाँ बस यही है. सो इसके बाद हम करेंगे टू बी कंटिन्यू. टू
बी कंटिन्यू, और इसको हम एम कर देंगे। एक्सकेप दबा सकते हो तुम, एक्सकेप दबा के एम दबा दोगे ना, सीधा मार्कडाउन आ जाएगा, टू बी कंटिन्यू। और इसके बाद अगर जैसे हम इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं ना, तो ऐसे एक दो तीन, तो ये पूरी लाइन लग जाएगी, तो टू बी कंटिन्यू। और इसको स्लैश भागे ना बाहर आ जाता है, जैसे अब इसके अंदर से लगे ना, सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर लो, अगर एस्केप दबाओगे ना तो बाहर आ जाएगा सेल के, और जब दो बार डी दबाओगे ना तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। बस हमने आज कितना पढ़ा, आई जस्ट रिवाइज इट फॉर यू, आई जस्ट गो थ्रू दिस। पहले हमने ये सीखा कि हम ने कैसे भी उससे कमांड लिखवानी है, हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन, जो भी लिखवाना है, हेलो फिजिक्स, ही इज क्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने एक दो तीन लाइनें लिखवानी है, कैसे लिखवानी है, उसके बाद कमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के और गैप कैसे देना लाइन में, ये यार ये तो बस थोड़ी सी मतलब आपको सीधा सीधा बताऊं यार, ये टाइम पास चीजें हैं। उसके बाद मार्कडाउन में फैंसी कैसे लिखना है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इंट क्या है, इंटीजर किसको कहते हैं, स्ट्रिंग किसको कहते हैं, ट्रू फॉल्स किसे कहते हैं, बुलियंस को फैंसी नेम में कहते हैं। ठीक है, उनका डेसिमल्स क्या होता है, कैसे कैसे प्रिंटिंग होती है, अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट किया तो क्या प्रिंट करेगा, अगर हमने ऐसी प्रिंट किया तो वो वेरिएबल समझ के उसकी कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहेगा, अगर होएगी तो करेगा, नहीं तो एरर देगा। उसके बाद इकट्ठे प्रिंट करना तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद टाइप चेक करनी है तो टाइप लिख के उसके बाद सिंपली उसका जो नाम है वो डाल देंगे। एफ एफ चीज यूज होती है यहाँ पे, अगर हमने बहुत सारी लाइनें के अंदर बहुत सारे हमने वो लिखने हैं। ठीक है, देखो हाँ, उसके बाद हम उसके बाद मैं बताता हूँ। तो उसके बाद ये है कि हम मैथ्स कैसे करनी है, प्लस माइनस वगैरह कैसे करने हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद में ये बता दिया कि इनपुट आउटपुट कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ है। सो we are no, I'm not a person who will be teaching you a detailed kind of thing कि अब definition of string क्या होती है, like someone wrote that echo on a thing and change it to another form. We can make calculator also like this. Yeah, it's a working calculator. ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं हम, इसने वही की है, वो कर सकते हैं यार, बड़ी चीजें कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आई अप्रिशिएट दैट। उसके बाद क्या है कि चीजें कि आई एम नॉट गोइंग इनटू लाइक कि यार अब डेफिनेशन बताओ इसकी क्या होएगी, ये होएगी। ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जो चाहिए वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं कि यार अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यार वो है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है और एक सेंटेंस है, बस इतना इतना है यार। ठीक है, ठीक है, वी आर नॉट अ सी एस सी पीपल, वी आर लेजी क्रेजी पीपल। ओके, सो अब ये हो गया हमारा, इसको हम कंट्रोल एस दबा देंगे ताकि यहाँ पे 1 सेकेंड वो आ जाए। ये तो कभी कभार यार फिर आपकी मेहनत पानी में चली जाती है। और यहाँ से बैक कर देंगे, जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया तो आपका सारा सिस्टम जो आप कर रहे हो बंद हो सकता है, पर बंद नहीं भी होगा अनटिल और अनलेस आपने टर्मिनल से बंद किया हो। ठीक है, जब टर्मिनल क्विट कर दोगे ना आप, तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, वो देख लेना एक बार। अब मैं इसको एक जैसे रीलोड करूंगा, तो रीलोड में एक मेन डॉट आई पाइथन नोटबुक है और मेन डॉट पाई नोटबुक है, तो दोनों के लोगो अलग है, बस इतना ऐसा फर्क है। सो दिस इज अ कमेंट, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू वर्क विद गिट। तो सबसे पहले गिट भी हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी गाइस। सो आई अप्रिशिएट दैट 14 के 14 बंदे यहाँ पे ही हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर माई सीनियर्स, आई रिस्पेक्ट दैट। तो अब हम क्या करते हैं, हम गिट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सबको। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ और ध्यान से मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट को भी टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू इंस्टॉल गिट। अब विंडोज का क्या झंझट है, विंडोज के लिए गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, गिट डाउनलोड। सो गिट और ग्लैमो की वेबसाइट सिमिलर सिमिलर सी है, इन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा, सो इन्होंने दिक्कत है क्या इस वेबसाइट में, तुम्हें भी ऐसी दिख रही है क्या, ये पहले थोड़ी सी अलग थी, मतलब इससे अच्छी थी वेबसाइट। तो यहाँ तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी, फिर यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर लिनक्स। अगर तुम उसमें जाओगे glamour.org में, जो मेरा पाइथन पैकेज है, उसकी भी सिमिलर सिमिलर सी वेबसाइट है, सारा कुछ ऊपर ही पड़ा हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल। ग्लैमो मत करना अभी बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट, कर लेना वैसे अच्छी बात है।
पब्लिसिटी मिलती है थोड़ी सी। तो ऐसा है कि डाउनलोड करोगे तो ये बता देगा कैसे करना है। ब्रू इंस्टॉल गिट फॉर मैक, और फॉर विंडोज आप देख लेना कैसे करना कि एक बार ही देख लो यार। पिप इंस्टॉल गिट करना, एक मिनट रुको, करके देख लेते हैं। मैंने यार का अभी कुछ टाइम हो गया मैंने छोड़ दिया ना विंडोज में। ऐसे कर लेना, पिप इंस्टॉल गिट नो मैचिंग। अच्छा, हम्म, फिर ना विंडोज स्टोर में जाना, या एक मिनट मैं यार तुम्हें दे ही देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा फिर, तुम्हें करना है ना। अम, वो तो सिंपल है, डायरेक्ट है उसके लिए ना। ब्रू इंस्टॉल गिट करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे फॉर मैक, एक बंदा था पोल में, ब्रू इंस्टॉल गिट, तो ये सारे इंस्टॉल करने लगेगा। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल कंट्रोल सी दबा देता हूँ यहाँ पे, बंद कर इसको। अरे बंद कर। हाँ, बंद, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है यार, वो इंस्टॉल करने लग गया था सारा गिट को। ठीक है, तो ऐसा है। और फॉर दोज हु आर जस्ट यूजिंग, वो यही कह रहा है, इस वेबसाइट पे जाओ। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया होगा कि विंडोज के लिए खुलेगी नहीं है वेबसाइट। इस गिटहब वेबसाइट सफिशिएंट और वी हैव टू डाउनलोड ऐप? वेबसाइट सफिशिएंट है दीदी, और ऐप ऐसी है फालतू। एक बार यार ये खोल के देख लो, इज इट वर्किंग फॉर विंडोज यूजर? ऐप ऐसी है, ऐप में कुछ नहीं है, सारा वेबसाइट ही है। एक बार ये देखो, प्लीज ओपन एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू डाउनलोड गिट। गिट ना फॉर विंडोज विल बी इंस्टॉल लाइक अ ext फाइल, ऐसा कुछ होगा मतलब, फॉर विंडोज के लिए। Like Mac and Linux is very simple. You can just code and download anything. As simple as that. तो वो एक बार विंडोज के लिए देख लो, ext फाइल डाउनलोड हो रही होगी, अगर हो रही है तो प्लीज से यस। यस कह दो यार, या नो कह दो अगर नहीं हो रही, फिर देख लेते हैं। आई ऑल्सो हैव विंडोज राइट नाउ विद मी, सो वी कैन चेक, बट वो फिर ऑन करना पड़ेगा। सो एनी अपडेट्स यार, किस कोई तो बताओ यार। एक ओपन ही करनी है विंडो, यार कल पार्टी है। ओके, सो इट्स वर्किंग राइट। वैसे डाउनलोड कर लेना एक बारी। तो एक बारी ना क्या करना, आफ्टर डाउनलोड, आई गेस यू हैव डाउनलोडेड राइट, स्माइल, यू गाइस हैव डाउनलोडेड गिट, एक बार यस कह दो यार। गिट डाउनलोड है, ओके ओके। सो ऐसे जैसे आपने डाउनलोड कर लिया ना, अब सीएमडी में जाना विंडोज वाली, और टर्मिनल में जाना अगर मैक पे हो तो लिखना है ऐसे गिट स्लैश स्लैश वर्जन। मेरा आ रहा है 2.50। ठीक है, आपका भी कुछ कुछ आ जाएगा, आ रहा है कुछ कुछ। अगर ऐसे कोई वर्जन आ रहा है तो यस बोल दो एक बार, आई विल बी लाइक ठीक है, हो गया। यार अगर नहीं आ रहा तो बता दो, वी विल वेट एंड फिक्स दैट। नो वाला कोई बोल ही नहीं रहा, मुझे लगता सारे मतलब सही है यार फिर तो। अगर नो नहीं बोल रहा तो यार आई एम लाइक आई एम शॉक कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा फिर भी ठीक है। इट्स टेकिंग टाइम टू डाउनलोड, इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा ऐसा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लो यार। ऐसा हमने कर लिया ना, so you have to go to GitHub. You have to follow me if you want. Then you have to go to this site. I'll share this in group. इस पे जाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो कर लेना यार, अपना थोड़ा सा नाम दो। जैसे एक दो और यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैं नेम नहीं लूंगा बिकॉज ये वीडियो अपलोड होनी है। सो दे ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दिस वेरी क्रेजी।
So I want that university club should be like this in the in with respect to these things. एक रिपोजिटरी ऑलरेडी बनी हुई है जीएनडी फिजिक्स क्लब के नाम से, वो छेड़ने की जरूरत नहीं, वो आप छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि ऑनर मैं हूँ। तो आई जस्ट क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर लाइक GNDU अंडरस्कोर पाइथन 25 2025 एंड आई राइट अ डिस्क्रिप्शन। रिपोजिटरी मतलब मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनर कौन है? ऑनर इन तीनों, यार मेरे पास बहुत सारे एसेस हैं तो मैंने GNDU एसेस चूज किया। So right now what I will do is it is Python for physics 2025 education for all। ठीक है, आप प्राइवेट है यहाँ पे पब्लिक कर देंगे, कोई भी देख सकता है। ऐड है रीडमी फाइल कर देंगे, बड़ा अच्छा बना दिया इन्होंने कुछ दिनों में ना। तो ऐसा ऐसा है। तो क्रिएटर रिपोजिटरी लाइसेंस MIT करना है यार, भूल गया, चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड दिस फाइल, यू कैन सी दिस। अगर मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड करता हूँ तो यहाँ पे करता हूँ तो यू व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू कैन सी दिस। ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा रीडमी फाइल इज जस्ट यार कुछ भी आप शो करना चाहते हो कि इसमें क्या है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी क्या क्या चीजें। अब मैं क्या करूंगा, इस पे ये कोड वाला बटन दिख रहा है ना हरा हरा, इस पर दबाऊंगा। यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, इसको दबाऊंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। या तो आप जिप फाइल सारे सारे डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे लिखा गेट। यार वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज गेट। गेट एक नाम है जिसको लाइनेक्स ने बनाया था, लाइनेक्स के फाउंडर ने बनाया था लाइनेक्स को यूज करने के लिए। ऐसा ऐसा कुछ हिस्ट्री है, देख लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ऐसा ऐसा था तो। एक मिनट, पावर ऑफ होगी मेरी एयरपोर्ट, एक मिनट गाइस, लेट मी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई गेस मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, मतलब मेरी आवाज क्लियर है सबको? क्लियर ही होगी। तो ऐसा ऐसा सा था, हिस्ट्री थी इसकी कोई। तो इन्होंने क्या किया था कि कोडिंग से कैसे वेबसाइट को कंट्रोल करना किसी चीज को अपलोड करने के लिए, तो ऐसा था। तो हमने क्या करना है कि गेट क्लोन, और वो लिंक डाल देना, कॉपी पेस्ट कर देना। तो क्या किया हमने, गेट क्लोन किया और वो लिंक डाल दिया हमने। और मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, यस। तो इसको एंटर कर देना है, पर नहीं नहीं नहीं, पहले हमने क्या करना है, ये भी ना मत करना यार, ये ना लोकल फाइल में कर देगा। तो देयर आर सम थिंग्स, सीडी डाउनलोड्स। सीडी मतलब चूज अ फोल्डर वेयर यू वांट टू स्टोर द फ्यूचर फाइल्स, और उसका पाथ डाल दो। मैंने डाउनलोड्स में सारा कुछ सेव करना है, तो ये आ जाएगा मैक मैकबुक जो भी तुम्हारा आ रहा है, विंडो 32 सिस्टम जो भी होता है, उसके बाद तुम्हारा ये लिंक आ जाएगा। तो सीडी से तुम पाथ चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद मेक डायरेक्टरी कर सकते हो, मेक डेर, mk make then dir एंड फाइल फोल्डर का नाम लाइक GNDU ऐसे रख दिया। तो ऐसे क्रिएट किया, वो रन हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर के अंदर, यार बहुत कुछ चीजें। अब देखो ये GNDU नाम का ये फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है, ये रहा फोल्डर। अगर मैं इसको जूम कर सकता हूँ तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया जिसके अंदर 9 आइटम है। तो अब क्या करूंगा कि आई गो लाइक cd.gnu, तो ये GNDU पे लोकेट हो गया। अब जो भी चीजें मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा वहां पे एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो अब क्या करना, हमने क्लोन करना है जो यहाँ पे इसका सारा डेटा है ना, जो इसका कहाँ गया, जो इसका सारा डेटा था वो वहां पे सारा ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है नेट से, ठीक है, नेटवर्क चाहिए इसके लिए आपको। गिट क्लोन पेस्ट। अब क्या किया मैंने, पेस्ट कर दिया सारा कोड, कोड नहीं लिंक, और प्रेस एंटर किया। अब क्या कर रहा है, क्लोनिंग दी, उसने उसने क्लोन कर दिया फटाफट। फटाफट क्यों किया, क्योंकि उसके फाइल यार सिर्फ एक थी। अगर फाइल ज्यादा होंगी, देयर इफ देयर आर मेनी फाइल्स इट विल टेक दैट मच टाइम। अब उसने क्या किया, आई गो टू द फोल्डर, देयर इज वन आइटम नेम्ड एज GNDU पाइथन 25, जो इस रिपोजिटरी का नाम है, इस फोल्डर का नाम है, वो सारा आ गया। और इस फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फाइल है जो है रीडमिट फाइल, ठीक है, वो कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट गो विद द फोल्डर जो हमने बनाया था। हमने क्या बनाया था, GNDU पाइथन का फोल्डर। इसके अंदर एक day 1 का फोल्डर मैं कॉपी करूंगा यहाँ से,
और उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे डे वन का फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं, ताकि मैं पब्लिकली इसे अपलोड कर सकूं। अब क्या करूंगा कि गेट ऐड, ऐड के बाद डाल दूंगा एक डॉट, डॉट डालनी है स्पेस छोड़ के, नहीं स्पेस छोड़ के नहीं, स्पेस के बिना, स्पेस के बिना नहीं डालनी। अरे कुछ तो था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसे ही तो था, एक मिनट छोटी करना था स्क्रीन थोड़ी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अब हमने क्या करना था, इससे पहले हमने क्लोन की ना, वो वाले फोल्डर को चूज करना है पहले। GNDU फोल्डर के अंदर जो वाला गिटहब का फोल्डर है ना, उसको भी तो चूज करना है, वो तो भूल गए। GNDU_Python 25, इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स अपलोड है ना, इसको चूज करना है, बेसिकली सेम नाम वाले फोल्डर को चूज करना है जो हमारा अपलोड हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना है, गेट ऐड स्पेस छोड़ के डॉट, अब इसने सारी चीजें ऐड कर दी हैं उसके अंदर। अब आप जाओगे ना यहाँ पे, देखोगे डे 1 वाला फोल्डर आ चुका है यहाँ पे, मतलब डे 1 फोल्डर वाला तो हमने कॉपी करके डाला था, बट ये वाला वहां पे एक स्टोरेज बना रहा है जिसको हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे, वो वाला ऐड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, गेट स्टेटस, इसमें क्या बताया, न्यू फाइल्स अपलोड हुई हैं, एक तो स्टोरेज फाइल हुई है जो उसने क्रिएट किया है, उसने ये वाली फालतू की फाइल जो चेक पॉइंट से, जुपाइटर है ना एक चेक पॉइंट्स बनाता है हर पॉइंट पे कि वहां तक फाइल सेव रहे हमारी। उसके बाद हमारे पास जो मेन मेन फाइल्स हैं वो मेन डॉट पाई है और मेन डॉट आई पाइथन नोटबुक है, ये वाली फाइल अपडेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे कि हाँ बस हमें ये चाहिए, कमिट स्लैश मेन, ठीक है। उसके बाद हम मैसेज डाल देंगे कुछ भी, दिस इज माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। तुम्हारा नहीं होगा गाइस, तुम्हारे एरर आ रहे होंगे पक्का, अगर तुम कर रहे हो ना तुम्हारे एरर आ रहे होंगे, बिकॉज इट विल बी ऑल्सो आस्किंग समथिंग लाइक यूजर आईडी वगैरह, तो वो तुमने गिटहब की डालनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आई मेक अ शॉर्ट वीडियो कि कैसे करना है, और या फिर एक यूट्यूब वीडियो भी लिंक कर दूंगा या एक अलग से बना दूंगा कैसे कैसे करना है अपना न्यू अकाउंट बना के, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या होगा, ये परमिशन काफी मांगेगा तुमसे, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो। तो ऐसा है कि अभी आप देख लो कि दो तीन कमांड जो होती है, गिट कमिट स्लैश स्लैश एम का मतलब है कि मेन ब्रांच में, इसके अंदर ना अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ये देखो मेन है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए, बट वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग वाली साइड चली जाती है, अगर वो फ्यूचर में देख लेना। अभी हमें मेन ही चाहिए, मेन के अंदर सारा डेटा होगा। तो ऐसे मेन और एक मैसेज डाल दिया, ये मैसेज ना यहाँ पे शो आता है इनिशियल कमिट, ये एक मैसेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ला दिया दिस इज माई फर्स्ट कमिट, एंटर करा, कमिट हो गया, उसने क्रिएट कर दिया। अब हमने फाइनली उसको पुश कर देना वहां पे, तो क्या होगा, गिट पुश। अब क्या करना है, हमने एंटर दबा देना है, पुश होगी मेन के अंदर। अब यहाँ पे हम एक बार रीलोड मारेंगे, रीलोड मारा, डे 1 आ गया। कभी कभार क्या होता है कि आई एम अ फाउंडर, आई एम लाइक क्रिएटर ऑफ दिस यार फोल्डर, तो ये मेरे से कुछ मांगेगा नहीं। अब देखो दिस इज माय फर्स्ट कमिट, दिस इज माय फर्स्ट कमिट, ये मेरे से कोई परमिशन नहीं मांग रहा। अगर आउटसाइडर कोई अप्लाई करेगा तो सारी रिक्वेस्ट इसमें मुझे दिखेंगी, पुल रिक्वेस्ट, कि कोई जो आउटसाइडर है ना वो चेंजेस करना चाहता है, ठीक है। तो वो फिर मैं चेक करूंगा, देन आई विल प्रूव कि हाँ यार कुछ तो है, सही है तो कर दूंगा, नहीं तो कोड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सा है कि यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास 0.2% हमारा पाइथन का कोड है, 99% हमारा जो पाइथन नोटबुक का कोड है, ठीक है। तो ऐसा है, अगर हम एसएमएस में जाएंगे भी, मेन डॉट आई पाइथन नोटबुक खोलेंगे और वो थोड़ी सी प्रीव्यू हमें मिल जाएगा, इसमें लोडिंग लगेगा, जितनी ज्यादा लंबी फाइल होगी उतना टाइम लगेगा, और ये सारा कोड आ गया, ठीक है। So this is how we work with the version control system. That's it to for today. कुछ खास था नहीं, बेसिकली आपको पाइथन सीखनी है फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा टेक के साथ इंक्लूड होना है ना, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच अ स्मॉल 5 minutes video of how to download git and do github stuff,
नहीं तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो एक बार देख लेना, क्योंकि न्यू अकाउंट है फॉर श्योर, अगर अगर किसी का न्यू अकाउंट है तो दिक्कत आ रही होगी, वो कुछ ऐसे यूजर नेम वगैरह मांगता है, यूजर नेम और आईडी मांगता है, तो वो आपको टोकन भी मांगता है। पता है क्या करता है वो, यूजर नेम और टोकन मांगता है, तो आपको पता है यहाँ से बड़ा झंझट सा है, मैं करके भेजूंगा तुम्हें। तो ऐसे सेटिंग्स में जाके ना, तो यहाँ से डेवलपर सेटिंग्स में जाके यहाँ से ना टोकन आपको करना पड़ेगा, क्लासिक टोकन, और यहाँ से जनरेट न्यू टोकन करके क्लासिक करके जनरेट करेगा, वहाँ पे तुम्हें एक बार ये स्टेप देना पड़ेगा, क्योंकि नो वन नो कंप्यूटर लाओ गिव अलाउंस टू वेबसाइट टू असेस योर कंप्यूटर, ओके। हालांकि ये सेफ चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो नहीं है कि हाँ आपका अटैक हो जाएगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो भी सकता है जिसका मन करे, तो वो तो ऐसे भी हो जाएगा अगर होना हो, बट नहीं, दिस इज अ वेरी सेफ थिंग, क्योंकि टोकन वगैरह यूज हो रहे हैं, तो ऐसा ऐसा चक्कर पड़ेगा, मैं करके भेज दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं, एक बार आप देख लेना, 5 मिनट के अंदर का काम है, तो उससे आपका सारा सेटअप हो जाएगा। फिर आपको को ये बस 3 कोड लिखने हैं, कौन से, गेट cd डॉट फोल्डर नेम, ये स्लैश स्लैश पे मत जाना, मतलब यहाँ पे फोल्डर नेम लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है मेक डिर की जरूरत नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, फोल्डर नेम, ठीक है। उसके बाद गेट क्लोन स्लैश स्लैश लिंक, जो भी है लिंक डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अपने अपलोड करना है गेट, पहले उस cd डॉट रेपो फोल्डर में जाना ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट ऐड करना है, जो भी अपनी न्यू चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गेट कमिट करना है टू द मेन ब्रांच, जिस ब्रांच में भी आपने करना है। उसके बाद एक मैसेज डाल देना, जो भी दिस इज माई मैसेज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गेट पुश कर देना। एक ये भी चीज़ होती है फोर्स वाला धक्का होता है, तो मत करना, पुश, बस ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, और आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट है, बेसिक बेसिक जितना आपको चाहिए, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड अप माई रिकॉर्डिंग, एंड अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।